Hello. Hello, hello. Hello. Namaste, dear members of faculty, staff, and student. I welcome you all on this ninth International Day of Yoga. Today, we gather here to celebrate the ninth International Day of Yoga, a global event that highlights the profound significance of this ancient practice in our modern world. The theme of this year's International Yoga Day is Yoga for Vasudev Kutumbakam, an Asian Sanskrit phrase translated to the world is one family. This theme beautifully captures our shared aspiration for one earth, one family, and one future. It reminds us that despite our diverse background and cultures, we are all interconnected and part of a large global family. Here at IIT Guwahati, let us celebrate this ninth International Day of Yoga through the practice of yoga. Let us cultivate compassion, unity, and a vision of a brighter future for all. To commence our event, I would like to call upon our guest and professor to light the traditional lamp, symbolizing the dispelling of darkness and the awakening of the knowledge. This ritual reminds us of the inner light that yoga helps us to ignite.
Now, I would like to invite Professor Amresh Dalal, the Associate Dean of the Students Affairs at IIT Guwahati, to deliver the welcome address. Their insightful words will set the tone for our celebration. Respected chief guest and guest of honor and all present here, a very good morning to all of you. I am very much delighted to welcome the chief guest, Susri Alakananda Joshi, and the guest of honor, Professor PK Iyer, to this to celebrate the International Day of Yoga. And I also welcome all of you. You came here with great enthusiasm, although the weather is very uh, is not that much good, and it is raining outside. And you know that this International Day of Yoga is celebrated every year on 21st June. And this year we have the theme One Yoga for One World. And once again, I am immensely pleased to welcome our chief guest and Professor Iyer and all of you to celebrate the 9th International Day of Yoga. So happy International Yoga Day. Thank you. Thank you so much, sir. Next, we will extend our felicitation to our esteemed guest, Mrs. Alka Gauri Joshi. For that, I would take the honor of inviting our guest and our Associate Dean to felicitate ma'am. Moving on, I would like to invite Director Sir kindly grace us with few words of wisdom. So, Honorable Chief Guest, Alka Madam, Professor Amresh Dalal, Professor Deepak, our colleagues from IIT, Roman, Diganta, other sports staff, other colleagues and staff of IIT Guwahati, my dear students, all other participants. Good morning and warm welcome for these ITY celebrations. It's a great occasion that we all have gathered today to highlight the importance of yoga and show the world how this through culture we can definitely demonstrate that this form of practice, I would say, rather than as a simple exercise or a set of exercise, we can show the world how we can remain healthy. It has taken up in a very big way across the world. Our honorable prime minister, as you all know, has gone to US and he'll be demonstrating this even in the United Nations. The time difference is huge, so early morning, so we'll be able to see that later. So this is how we can spread the message of good health through our ancient culture, and I'm very happy that we have been doing this quite regularly. Last year also we had a huge celebration. This year I am very happy the students have participated so enthusiastically in a very big number. In fact, I see there is no place now towards the end. I'll not take much of your time. Let us have a great session today and let us spread this message that through this way we all can remain united, remain healthy, and we can have a better future ahead. So with these few words, thank you once again for coming for this function. Thank you. As we have the honor of hosting Mrs. Alka Gauri Joshi, associated with Prant Sangathan, Vivekanand Kendra and Assam Prant, her address will shed light on the immense benefit of yoga and its relevance in today's world. Ma'am, please. Namaskar. Can you hear me? Can you hear me? Do you hear me?
Do you hear me there? Pakka. Okay, thank you. Respected Director Sir, Dean Sir, faculties of IIT, faculty members of IIT and dear friends, नमस्कार to all. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी आज यहाँ योग के लिए एकत्रित आए हैं। बहुत बहुत बार हम सोचते हैं हम अच्छे से योगा करते हैं, हम डेली 1 घंटा योग करते हैं। आप में से कौन कौन ऐसे हैं कि डेली 1 घंटा योग करते हैं? कुछ कुछ तो है, ठीक है। कौन ऐसे है वो 2 दिन में 1 बार करते हैं? कौन ऐसे है वो हफ्ते में 1 दिन करते हैं? ठीक है, लेकिन योग तो करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे होंगे जो योग दिवस के अवसर पर पक्का करेंगे, ठीक है। योग दिवस पर साल में 1 बार तो, वर्ष में 1 बार तो अवश्य करेंगे। तो प्रश्न ऐसा है कि योग क्या है? हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसको बाहर से योगा करके बोलते हैं और हम भी योगा करके करते हैं। योग का योगा हो गया तो हमको लगता है हम डेवलप हो गए हैं। तो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे एकत्रित हुए। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि योग क्या है? हम सभी आसन कर रहे हैं, कभी ना कभी किए हैं, कभी नाक पकड़ के कुछ प्राणायाम किया होगा। कोई लोग बोलते हैं ये क्या है, शरीर को टेढ़ा बेका करते रहते हैं, नाक पकड़ के बैठते हैं, उससे अच्छा है थोड़ा खेलो, उससे अच्छा है थोड़ा दूसरा कुछ करो, ये एक जगह बैठने से क्या होने वाला है। लेकिन योग मतलब केवल यह व्यायाम पद्धति हम सोचते हैं, केवल आसन है, प्राणायाम है, ऐसा यदि सोचते हैं तो दैट इज नॉट योग, दैट इज नॉट कंप्लीट। मैं यदि बोलूंगी ये मेरी उंगली है तो ये गौरी है, होगा क्या? ये अंगूठा है, नहीं ये गौरी है? इट्स अ पार्ट, इट्स नॉट कंप्लीट अलका गौरी, इट्स अ पार्ट, इट्स अ थंब ऑफ अलका गौरी। उसी प्रकार से आसन, प्राणायाम ये उसका अंग है। और आज की स्थिति में, आज के पूरे विश्व की स्थिति में हम देखते हैं तो आज भारत में विदेश से लोग योग सीखने के लिए आते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगी, अपने विवेकानंद केंद्र के बहुत सारे विद्यालय चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के विद्यालयों से पढ़ा वाला एक अपना विद्यार्थी कनाडा में पढ़ने गया MBA। जब छुट्टी में आया, उसने सबसे पहले बोला मुझे, दीदी मुझे एक गीता के ऊपर पुस्तक दीजिए और एक योगा की थ्योरी वाली पुस्तक दीजिए। बोला अरे क्या हो गया एकदम तुमको, तुम वहां जाके MBA पढ़ रहे हो और तुमको गीता क्यों चाहिए, तुमको योगा की थ्योरी की पुस्तक क्यों चाहिए? बोले नहीं, वहां तो जाने के बाद लोग मुझे पूछते हैं, कह रहे यू आर फ्रॉम इंडिया सो यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन गीता, जस्ट शेयर इट विथ अस, शेयर दोस टेक्निक्स, management techniques from Gita with us. Tell us something about that. We want to know yoga, they call it yoga. We want to know yoga. Tell us about yoga. What is it? अभी लोगों को धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि योगा मतलब केवल सवेरे का 1 घंटे का व्यायाम नहीं है। योग ये एक जीवन पद्धति है। इट्स अ विजन ऑफ वननेस, a way of life based on vision of oneness, that is yoga. योग का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसका? हिंदी में बोलते हैं ना योग करो, 2 और 4 का योग करो, कितना होता है? 2 और 4 का योग करो, कितना होता है? 6। योग मतलब जोड़ना है। तब ये जोड़ना किसको है और किसके साथ है? किसको जोड़ना है? कोई बताए, कोई आप बताए। जोड़ना है क्या? 2 बातें हैं जिसको जोड़ना है। बहुत सुंदर, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन ना मैं आत्मा समझती हूँ ना परमात्मा समझती हूँ। आपका उत्तर बहुत सही है, एकदम सही है, लेकिन मैं समझती नहीं आत्मा क्या है
उसका मुझे अनुभव नहीं है, मुझे पता नहीं है, परमात्मा मैं जानती नहीं हूं। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओम ओम, ठीक है या इको है? मुझे ही कान में कुछ अलग अलग सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जोड़ना जो है वो किसको किसके साथ जोड़ना है, बहुत सुंदरता से बताया है। हमने यदि भगवत गीता पढ़ी है या सुनी है, आपको पता है भगत सिंह ने भगवत गीता अपने हाथ से लिखी है। भगत सिंह तो पता है, भगत सिंह ने भगवत गीता का हस्तलिखित लिखा वाला है, अपने हाथ से भगवत गीता लिखी है। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को योग बोला गया है, उसका नाम योग से है। अर्जुन विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, एक एक योग पाठ अध्याय का नाम एक एक योग से दिया हुआ है। और उसमें अंत में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, ये भगवत गीता में क्या है, भगवत गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषदों में सारा भारत का ज्ञान है, नॉलेज इज देयर। ब्रह्म सूत्र में भी वही है, नॉलेज है, और वही इस योग में है। तो ये सारा ज्ञान जब योग में है, तो योग मतलब केवल अर्धकटी चक्रासन करो या केवल पादास्तासन करो, इतना सीमित नहीं है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये जोड़ना जो है वो किसको किसके साथ जोड़ना है, ये सबसे पहले समझना है। वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, इंटर डिपेंडेंट। डू यू नो इट? डू यू नो इट? वी ऑल आर रिलेटेड। मिता को ये ओयासिन बोलता है ना, हम सभी जुड़े हुए हैं। हम है, मैं हूं क्योंकि आप सब लोग हैं। अभी ये एनवायरमेंट इसको समझता है, क्वांटम फिजिक्स इसको समझता है, क्या हम इसको समझ रहे हैं क्या? वी ऑल आर रिलेटेड, हम सभी एक ही है। वी ऑल आर वन ऐसा नहीं है, वी ऑल इज वन ऐसा है। हम कैसे एक हैं, हम कैसे जुड़े हुए हैं, हम कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। मुझे याद है जब मैं सबसे पहले 1999 में नॉर्थ ईस्ट आई थी, अरुणाचल प्रदेश आई थी काम करने के लिए, तब बहुत एडवर्टाइजमेंट चलती थी 1411। 1999 में आप में से कोई कोई तो पक्के होंगे। 1411 पता है कुछ? 1411 क्या है? सेव टाइगर्स। कितने टाइगर बचे हैं? केवल 1411 टाइगर बचे हैं। यदि टाइगर मर जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे टाइगर को, बाघ को बचाने की मुहिम शुरू हो गई। अभी हम सुनते हैं हनी बी, हनी बी मधुमक्खी यदि खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा 3 साल। यदि मधुमक्खी खत्म हो गई तो 3 साल में हम सभी भूखे मर सकते हैं। क्यों? मधुमक्खी का हमारा क्या संबंध है? बट वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, इंटर डिपेंडेंट। ये वेब है, इट्स अ वेब ऑफ लाइफ। और ये जुड़े हुए हैं, इस जुड़ाव को अनुभव करना है, इस जुड़ाव को समझते हुए काम करना है, ये महत्व का है। इसलिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने आप को समझना है तो मैं कौन हूं, यहां से शुरुआत हो जाती है। हम सोचते हैं ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, आई एम दिस BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। लेकिन यदि केवल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तक हम सीमित रह जाते हैं तो हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। एकात्म जीवन दर्शन जो है वो बताता है कि मैं इस विश्व का अंग हूं और मेरा विस्तार होता है, मेरा मैं बढ़ता रहता है। उदाहरण बताती हूं मैं, ये अनुभूति की बात है। जब मैं प्रवास में जाती हूं, आप कहीं प्रवास में जाते हैं, यहां से कहीं बाहर जाना है, कौन सी सीट चूज करेंगे? ट्रेन में हो या बस में हो, कौन सी सीट चूज करते हैं? विंडो सीट। सबको विंडो सीट चाहिए होती है। यदि आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया, नया नया विवाह हुआ है, पत्नी साथ में है, पत्नी को लेकर आप चल रहे हैं, तो विंडो सीट किसको मिलेगी? पत्नी को देंगे। क्यों? आपको तो इच्छा है विंडो सीट में बैठने की, फिर भी पत्नी को दे रहे हैं। क्यों? बच्चा हो गया, फिर विंडो सीट किसके पास आएगी? बच्चे के पास। क्यों? क्योंकि उसके खुशी में मेरी खुशी है। मैं
अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं जब मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार सुखी है, तब मैं सुखी हूं। मेरी माँ बीमार है तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूं पिकनिक। ये जुड़ाव है। तो मेरा विस्तार हुआ है मेरे परिवार तक। बहुत बार भारत में ये सहज है, लेकिन उससे बड़ा है मेरा विस्तार मेरे समाज तक हो। केवल परिवार नहीं, परिवार से भी बड़ा ये समाज है। ये समाज भी मेरा ही विस्तारित रूप है, और उस समाज के लिए, समाज का दुख दर्द दूर करने के लिए मैंने कुछ करना, ऐसा यदि हम अनुभव करते हैं तो मेरा विस्तार, मेरा विकास समाज के स्तर तक हुआ है। वहां भी सीमित नहीं है, उससे ऊपर राष्ट्र है। वो राष्ट्र है तो मेरा समाज गया, मैं पंजाबी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं मद्रासी हूं, सब खत्म हो जाता है। मैं भारतीय हूं आता है, क्योंकि भारत का दुख मेरा दुख, भारत की खुशी मेरी खुशी, भारत का अभिमान, भारत का गौरव मेरा गौरव। तो मेरा विस्तार भारत तक हुआ है, मेरा मैं वहां तक विस्तारित हुआ है। उससे भी ऊपर ये सारी सृष्टि है, और उससे ऊपर परमेष्टि है। ये विस्तारित रूप है, ये अखंड मंडलाकारम है। हम पढ़ते हैं ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम। आगे क्या है? तस्मै श्री गुरवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है जो मुझे यह मेरा विस्तारित होने वाला जो रूप है उसका दर्शन करा देता है। मैं मतलब केवल छोटी सी अलका गौरी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में नहीं हूं, तो ये सारे बैठे वाले भी मेरा ही रूप है, मेरा ही विस्तारित रूप है। ये समाज, राष्ट्र, सृष्टि मेरा विस्तारित रूप है। अभी जब ये मेरा ही है, तब मेरा दायित्व है, मैंने उसके लिए कुछ करना है। ये कैसे? ये रिलेशन है। मैं एक व्यक्ति हूं, स्मॉल एंटिटी है। ये परिवार, समाज, राष्ट्र, इट्स अ बिगर एंटिटी। तो स्मॉलर एंटिटी ने, मैंने बिगर एंटिटी के लिए करना है, मतलब अपने विस्तारित रूप के लिए करना है। तो कैसे करना है? वो योग है, क्योंकि ये जुड़ाव है। क्या करना है? जैसे हम जन्म लेते हैं, हम अपने आप के लिए कुछ करते हैं? हमारे लिए कौन क्या करता है? हम बड़े कैसे हुए? क्या हमने पैसे कमाए? क्या हमने कुछ किया बड़ा होने के लिए? नहीं। आज हम यहाँ सुरक्षित है। यूक्रेन जैसी स्थिति हमारी नहीं है। हम सुरक्षितता से, आराम से यहाँ अपना काम कर सकते हैं, आनंद से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी अपने को मिली है। उसमें मेरा योगदान क्या है? ये इतने बड़े बिल्डिंग्स, IIT इतना बड़ा कैंपस बना हुआ है, 700 एकड़ कैंपस है सुधा बने, इतना बड़ा कैंपस, इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतना सुंदर बगीचा, इसमें मेरा योगदान क्या है? कुछ नहीं। किसी ने तो किया है। सो हाउ आई एम गोइंग टू रीपे इट? तो हम जब बड़े होते हैं, समाज से हमको कुछ मिलता है, वो है हमारा योगक्षेम होता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, सुना है? योगक्षेमम वहाम्यहम LIC में लिखा होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हम बड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारा वहन योगक्षेम समाज देखता है। हम बड़े होते हैं, हम काम करते हैं। हम क्या करते हैं? काम करते हैं। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने को उसका फल मिलता है, कर्म का फल मिलता है। तो समाज से मुझे योगक्षेम मिला और कर्म का फल मिला। मैंने कितना दिया? एक बार दिया, कर्म किया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? तो मैंने एक बार कर्म किया है, मुझे समाज से 2 बार मिला है। आप बैंक से 2-2 बार लेंगे और एक ही बार वापस देंगे, बैंक तो खत्म हो जाएगी। तो इस समाज की शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने देना है, उसको बोलते हैं यज्ञ। वो जो यज्ञ है वो पंच महायज्ञ है। वो यज्ञ यदि हम नहीं करते हैं तो हम चोरी करते हैं, हम चोर होंगे। और वो यज्ञ मतलब निस्वार्थ सेवा है, बिना कोई अपेक्षा से। जैसे मेरा योगक्षेम हुआ, किसी ने किया। मैं जब माँ के पेट में जब होती थी, तब किसी ने अपनी सीट बस में माँ को दी होगी। क्या मैं उसको थैंक यू बोलने जा सकती हूँ? क्या मैं उसके लिए मेरी सीट दे सकती हूँ? नहीं। उसी प्रकार से मैंने अनेकों के लिए देना है, करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दैट इज यज्ञ। और वह यज्ञ हमको करना है, वो पंच महायज्ञ है। आप अपने योग वर्ग आपका नियमित चल रहा है,
कभी कभी उस योग वर्ग में इस थ्योरी को समझ लीजिए अवश्य। उस थ्योरी के माध्यम से हम योग को समझने का प्रयास करेंगे और अपना योग को समझते हुए करेंगे तो अपने आसन भी बहुत सुंदर होंगे। तो पहली बात एक बताई मैंने, ये अखंड मंडलाकारम, अपना विस्तारित होने वाला स्वरूप। और बड़े रूप के लिए जो मैंने करना है वो है बड़े के लिए करना, इसको बोलते हैं यज्ञ करना। वो यज्ञ पंच महायज्ञ है, वो बाद में देखिए। तीसरी बात आप सबके साथ शेयर करूंगी। योग जो है वो षड दर्शनों में से एक है। भारत का जो ज्ञान है वो षड दर्शन जिसको बोलते हैं, उन षड दर्शनों में से एक योग दर्शन है। और पतंजलि महर्षि अष्टांग योग दर्शन में बताते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्ति, मन की अशांतता जो है, अस्वस्थता जो है, उसको कंट्रोल करना, उसको डिसिप्लिन करने का माध्यम है योग। वो कोई आसन नहीं बताते हैं, लेकिन आसन हठयोग प्रदीपिका में बताया है, बहुत सुंदर सुंदर बताया है। तो ये बहुत महत्व की बात है, आज के लिए तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप IITians हैं, आप बहुत बड़े काम करने वाले हैं, बहुत प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है। एक ब्रिज बनाना है, आप उसके इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, उसके आप इंचार्ज हो सकते हैं, और आपके डिसीजन के ऊपर बहुत लोगों का जीवन निर्भर होगा। उस समय साहजिक है टेंशन आएगा, और टेंशन के साथ रिलेटेड सारी बीमारी आएगी। डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, एक एक करके लिस्ट बनेगी। और इसलिए आज मैंने परसों मई महीने की बात है, 25 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर गया, साइलेंट अटैक, पता ही नहीं चला। 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपना मन कंट्रोल में नहीं है। इस मन को शांत करना है। तो मन को अशांत मन क्यों होता है? उसके 3 कारण है। मन के अशांति के 3 कारण है। क्या कारण है? एक तो मल, मल मतलब इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी होती है, वो इम्प्यूरिटी को दूर करना पड़ेगा। षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, उसके कारण भी गड़बड़ होती है, इम्प्यूरिटी है। दूसरी बात है प्रक्षेप, मतलब क्या है? जैसे तालाब है ना, लेक, लेक का पानी यदि साफ है, गंदा नहीं है, तो एकदम नीचे क्या है वो हमको पता चलता है। लेक में यदि तरंग नहीं आते हैं, वाइब्रेशंस नहीं है वहां, कोई पानी स्टॉप्ड, वाटर इज स्टॉप्ड देयर, साइलेंट देयर, देन वी कैन सी द बेस। और तीसरी बात है, यदि वो लेक को कोई ढका हुआ है, आवरण है उसके ऊपर, तो फिर भी हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से मन के ऊपर होता है। मन में इंप्यूरिटीज आती है, मन में अशांतता आती है, क्योंकि हम आज का नहीं कल का विचार करते हैं, कल क्या होगा या गया कल क्या हुआ, पास्ट और फ्यूचर। सो बी इन प्रेजेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ देह बुद्धि है, आवरण है। मैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हूं केवल, ये आवरण है। मैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से परे हूं, ये समझते हुए करना। इसके लिए योग ये बहुत महत्व का है, और इसके लिए यम नियम महत्व के हैं। आप अपने योग के क्लासेस में अवश्य 5 यम 5 नियम है। अष्टांग योग में इन दोनों का बहुत महत्व है। हम कितने भी आसन करें, लेकिन जब तक हम यम नियम नहीं करते हैं, तब तक हम योग को सिद्ध नहीं कर सकते। योग को सिद्ध करना मतलब तिलक लगाना, गले में रुद्राक्ष पहनना, या एक ही स्थिति में कठिन कठिन आसन उस स्थिति में रहना, मतलब योगी हो गया, ऐसा नहीं है। यह है हम अपने आप को कितना जोड़ सकते हैं, अपने आप को कितना विस्तार कर सकते हैं, और उसके अनुसार कितना काम कर सकते हैं, कितना आपका कार्य हो सकता है। इसलिए योग ये एक जीवन पद्धति है, उसको समझना होगा। तो नियमित योगाभ्यास आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आसन ये योग नहीं है, वो भी योग है। लेकिन जैसे हम सोचते हैं मुझे डायबिटीज हो गया तो मैंने योग करना है, योग क्या है? एक पैथी जैसा हो गया। डायबिटीज ठीक करने के लिए योग है, बीपी कंट्रोल करने के लिए योग है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो सोचिए युद्ध शुरू हो गया है, आपके हाथ में AK-47 दी है, और उस AK-47 से आप उपयोग क्या कर रहे हैं? डंडे जैसा मार रहे हैं। AK-47 से डंडे जैसा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा होगा यदि योग केवल बीमारी ठीक करने के लिए ऐसा बोलते हैं तो नहीं है। योग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है,
और हमने उसके एक एक एस्पेक्ट को समझना है, पूर्णता से समझना है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहे हैं। आप आने वाले समय में इस विश्व के लिए मार्गदर्शक है। भारत ने बताया तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शुरू हो गया। इतने सारे देशों ने 77 कंट्रीज ने उसके लिए हाँ कहा है, क्योंकि भारत की ये ताकत भी बढ़ रही है। योग का अनुभव लोग कर रहे हैं। अपने मन को कंट्रोल करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, और केवल इतना ही नहीं तो सर्वत्र हार्मनी लाना। हार्मनी होती है और इसके लिए योग आवश्यक है। ये सीखना भारत आपसे चाहता है। भारत चाहता है आप जो आने वाला भविष्य है वो हमको योग सिखाए। यदि हम नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में हम विदेशियों से योग सीखेंगे। वो हमको योगा सिखाएंगे और हम बोलेंगे हाँ दिस इज योगा, थैंक्स फॉर टीचिंग अस योगा। हम योग को भूल जाएंगे। इसलिए हमने योग को समझना है, और ये पुस्तकों में से केवल नहीं समझेगा। पुस्तकें पढ़नी है लेकिन अपने जीवन से समझेगा। अपना जीवन ये सारे सृष्टि के लिए योगदान कारक होगा। यदि ऐसा है तो हम अलर्ट रहेंगे। बाहर से अंदर आते समय चप्पलें, बूट, शूज लाइन में रहेंगे। वो अलर्टनेस आता है। यदि योग जीवन में आता है तो चप्पलें लाइन में रहती है, अपने सारा सामान व्यवस्थित रहता है, इधर उधर गड़बड़ अव्यवस्था ये अपने से दूर हो जाती है। इसलिए योग ये जीवन में लाना है। अपने माध्यम से पूरे विश्व को ये योग सिखाने का दायित्व अपने कंधों पर है। इसलिए हमने अच्छे से सीखना है और सिखाने के लिए तैयार होना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे जाकर अनेकों जगह जाइए और इसको भारतीय ज्ञान को इसके माध्यम से फैलाइए। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. So moving on to showcase the practical aspect of one yoga for one world, we have organized with our first year students the performance of Surya Namaskar. Before that, I would like to request guests and professors to take a seat on the mat.
Yet another remarkable performance by our bachelor's first year of student. Moving on to yoga demonstration by our talented students and campus residents. They will exhibit various yoga postures and techniques highlighting the diversity and beauty of this ancient practice. Namah Shivaya. Namah Shivaya. विराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। स्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। टङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनन्मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। सेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। पादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदं श्रमोशनं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासवन्न पद्मचण्डकोश सन्ततिं वृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। संघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहनैनलोभकोपतापनाशनम् अन्तिकालभैरवाग्निसन्निधिनराध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे। नमः शिवाय। सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं शारदादियोगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। टङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे।
विमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनन्मनोज्ञेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालिभैरवं भजे सेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधि That was a remarkable performance. Keep applauding. So now the most awaited. Following this demonstration, we invite you all to join us for mass yoga practice. Kindly take some space among yourselves so you can have a smooth movement. This session aims to promote the learning of yoga by guiding the participants through easy and accessible yoga practice. Let us come together and experience the harmony and unity that yoga has to offer. Namaste, good morning. I wish you all a very happy International Yoga Day 2023. In order to get into the spirit of this event, let us practice a yoga sadhana. I invite all of you into the mat. Sit preferably in any meditative posture, Sukhasana, cross-legged. Take your time. Make yourself comfortable. Adopt Gyan Mudra. Place it on your thighs. Whenever you are ready, close your eyes. Take your time to relax the body, the breath, and prepare yourself for this yoga sadhana. We will start with 3 rounds of Omkar. Inhale. Bring your hands into the prayer position. Let's pray for harmony and peace. Repeat the prayer after me. Sangachadvam samvadvatvam Sambho manasi janatam Deva bhagam yatha purve Sanjnana upasate
संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. All right, we are ready for our practice today. Let us start our practice with yogic Sukshma Vyayam, loosening exercise. I would like to invite all of you to come into Samasthiti. Stand straight on your feet. Bring your foot together, hands besides the body. The allowed posture, Samasthiti. We are going to start with neck movement exercise. A word of caution, if you have severe cervical spondylitis, neck pain, avoid. We are going to start with neck forward and backward movement. Keep your head upright. With the exhalation, slowly drop your head down, touch the chest with your chin. Now inhale, slowly take your head up, bend your neck back and look towards the ceiling. This is one round, continue 2 more rounds. Again, exhale, slowly drop your chin on the chest. Inhale, slowly bring your head up. One more round, exhale, slowly drop it down. Inhale, slowly lift your chin up, bend your neck back. And then slowly with the exhalation, come back to the Samasthiti, relax. The next Sukshma Vyayam is trunk movement. Keep your legs few inches apart, preferably hip distance. Hands besides the body. Now with the inhalation, take your hands in front of the chest. Interlock your hands. Now exhale, stretch your hands and twist your body to the right side. Inhale, back to the center. And then exhale, twist your body to the left. This is one round. Continue 2 more rounds. Inhale, back to center. Exhale, twist to the right. Inhale, back to the center. Exhale, twist to your left. Inhale, come back to the center. Exhale, release your hands and come back to Samasthiti and relax. Next is knee movement. A word of caution, if you have severe arthritis on your knees, avoid practicing this asana or do it very carefully. For knee movement, again, keep your legs hip distance apart. Separate your legs hip distance apart. With the inhalation, slowly raise your hands in front of the chest, palms facing down. And then exhale, slowly bend your knees and drop your hips down as if you are sitting on a half yogic squat. Feel the stretch on your knees. Now inhale, straighten the leg, come back to the straight posture, drop your hands, exhale. 2 more rounds. Again, inhale, hands forward. Exhale, bend your knees, come to the yogic squat, half squat. Inhale, straighten the legs. Exhale, hands down. Last round. Inhale, one more time, hands front, in front of the chest, palm facing down. Exhale, slowly bend your knees, squat. And then inhale, straighten the legs, drop your hands besides the body, come back to the sthiti and relax. Now we are moving towards the yogasana. First yogasana we will practice is Tadasana. For Tadasana, again come to Samasthiti, join the legs, hands besides the body. Now word of caution, if you have varicose vein and cardiac problem, avoid practicing this asana.
Let us practice Tadasana. For Tadasana, apart your legs hip distance again. Bring your hands in front of the chest with the inhalation. Interlock your hands and then exhale, twist your hands forward. Now inhale, raise your hands up and lift your heels off the ground and balance the body on your toes. Maintain this posture 2 to 3 breaths with the body and breath awareness. Fixing your gaze on a point in front. To come back, slowly exhale, drop the heels on the ground and then release your hands and place the hands beside your body. Come back to Samasthiti. Relax. The second asana we are going to practice is Vrikshasana, the tree posture. For Vrikshasana, come to Samasthiti, legs together. Word of caution, if you have arthritis on the knees or vertigo, do it very carefully. For Vrikshasana, bring your right leg up and place the right foot on the left inner thigh. Try to keep your heels close to the perineum region. Secure your balance by fixing your gaze on a point in front. And now with the inhalation, slowly raise your hands up. Join the palms up above your head and maintain the posture for 3 to 5 breaths. Be aware of the body and the breath. Gracefully holding the posture. And to come out, slowly exhale, lower your hands besides the body. And then release your right leg, come back to Sthiti. Relax for a few seconds. Observe the change. We are going to practice on the left side. Again, Samasthiti. This time, take your left leg up and place the left foot on your right inner thigh. Heels close to the perineum region. Secure your balance by looking at a fixed point in front. And then inhale, raise your hands up above your head. Come to Namaskar Mudra and hold the posture with the body and breath awareness. Like a tree, you are strong, sturdy, and rooting down deeply through your feet. Now exhale, lower your hands, and then release your left leg. Come back to Sthiti and relax. The next asana we are going to practice is Trikonasana, the triangle posture. For Trikonasana, come to the alert posture Sthiti. We are going to start with the right side. Now separate your right leg 3 foot or 1 meter apart. Now stretch your hands out to the side. Turn your right foot right 90 degrees. Now slowly bend from your hip crease laterally to the right side, dropping the right palm either on the floor or on the ankle or on the knees comfortably. Turning your gaze over to your left middle finger. Maintain this posture with mind-body awareness. One final breath here. Now inhale, lift yourself up. Exhale, drop your hands. Turn your right foot left. And then join the right foot with the left foot. Come back to Sthiti and relax. Switch to the other side. Start with alert posture, Samasthiti. This time, separate your left leg 1 meter apart. Raise your hands sideways, stretch them to the side. Turn your left foot left. And with the exhalation, bend towards the left side, dropping the
left palm on your ankle or on your shin or the knees, wherever your hand goes comfortably, and turning your gaze over to your right middle finger. Maintain the posture, 2 to 3 deep breaths here. Be aware of the breath and the body. Now slowly come out, inhale. Exhale, drop the hands by the side of the body. Turn your left foot right. And now join your left foot with the right foot. Come back to Sthiti and relax. With Trikonasana, we completed standing asana. Now let's move towards sitting asana. Come to the Sthiti Dandasana. Sit at your place with your spine erect and legs are stretched out in front. Gently place your hands by the side of your hips, fingers pointing front, chin parallel to the ground. This is Dandasana. We are going to practice the first asana, Vadrasana, the firm posture, word of caution, arthritis on the knees, sciatica. If you are suffering, avoid practicing this asana. Now let us practice Vadrasana. Join the soles of your feet. Join the soles of the feet and bring your heels close to your perineum region. Interlock your hands. Join the soles of your feet and interlock your fingers. Hold your all 10 fingers and bring your heels close to the perineum region. Keep your spine straight, chin parallel to the ground. दोनों हाथों से अपने toes को पकड़ेंगे. And maintain the posture with firmness and stability. This is Vadrasana. Be aware of the body and the breath. Now to come out, slowly release your hands and place the hands besides the buttock. And straighten your legs, come back to Sthiti, Dandasana. And from here, you can relax in Vishramasana. Separate your legs, hands behind the body, slightly lean back. Next asana that we are going to practice is Ustrasana, the camel posture. For Ustrasana, come to Sthiti, Vajrasana. Join both the legs, come back to Dandasana. Now bend your right leg at the knee and place the right buttock on your right heel. Bend your left leg at the knee, place your left buttock on the left heel. Rest your hands on your thighs. This is Vajrasana. From Vajrasana, we can practice Ustrasana. Again, word of caution, if you have cardiac problem, high BP, hernia, avoid practicing Ustrasana. Now to come into the Ustrasana, slowly stand on your knees. Separate your knees, few inches apart, preferably the hip width. Now slowly lean back and place your palms on the respective soles of your feet. And now push your hips forward. Lift up your diaphragm, open the chest and drop your head back. Those who are not able to reach their toes, they can place your hands on their back to support and then slowly bend back from the lumbar region. Maintain this posture with mind, body awareness. To come out, slowly exhale, lift your neck and spine up, stand on your knees. And now join the knees. Sit on your heels, come back to Sthiti, Vajrasana. Now the next asana that we are going to practice is Shashankasana, the hare posture. For Shashankasana, separate your knees wide apart. Place your palms in between your thighs. And now slowly, with the exhalation, slide your hands forward and bring your chin, chest on the ground. Keep your hands in completely stretched position and maintain this posture with
breath, body awareness. Try to feel what's going on in the mind. To come out, slowly inhale, lift your head up and bring your hands back to the knees. Join the knees, come back to Sthiti, Vajrasana. We are going to practice the last sitting asana, that is Vakrasana, the twist posture. For Vakrasana, come to the Sthiti, Dandasana. Release right leg, then release left leg. Hands besides the buttock, spine straight. Now we are going to practice Vakrasana, the twist posture. Word of caution, if you have hernia, very severe back pain, slip disc, avoid practicing Vakrasana. Let us start with the right side. Slowly bend your right leg and place the right foot next to your left knee. Move your trunk to the right side and place your right hand behind, fingers pointing away from you. Now raise your left hand up and place the left arm around your right knee and try to touch your big toe or ankle or your shin. Lift up the spine and bring your chin to your right shoulder. Maintain this posture with body, breath awareness. Be aware of the twist, Vakra. Now, slowly come out. Release your left hand, release your right hand. Place both the hands by the side of the buttock. And now slowly straighten your right leg. Come back to Sthiti, Dandasana. Now we are switching to the other side. Gently bend your left leg at the knee and place your left foot close to the right knee. Turn your trunk to the left side. Place your left hand behind your back, fingers pointing away from your toes. Now raise your right arm up. Place the right arm around your left knee and try to catch hold of your ankle or your shin muscle. Maintain the posture with breath and body awareness. Be aware of the twist at the center of the body. And to come out, slowly release your right hand, release your left hand, place both the hands by the side of the buttock. Straighten your left leg, come back to Sthiti. Now you can relax in Vishramasana, separate your legs, hands behind your body, slightly lean back, close your eyes. With this, we are ending the sitting asanas. Now we are going to practice prone position asana. For prone position, lie down on your belly. Come to Makarasana, the Sthiti Makarasana. Separate your legs. Toes are pointing to the sides. Heels are pointing towards each other. Place your palms on your opposite shoulders and rest your chin on the intercrossing of your wrist. This is Sthiti Makarasana. Now we are going to practice the first prone position asana, that is Bhujangasana, the cobra pose. Word of caution: if you are suffering from peptic ulcer, hernia, and cardiac conditions, avoid practicing this asana. For Bhujangasana, release your hands and stretch your hands to the front. And then gently bring your palms close to the rib cage. Your elbows are parallel to each other. Shoulder blades are squeezed towards each other. Now with the inhalation, raise your chin, chest up till the navel region. The lower part of the body is resting. Toes are in stretching position. Maintain this posture with breath and body awareness.
And to come out, slowly exhale, drop your chin, chest on the ground. Now release your hands and relax in Makarasana, Sthiti Makarasana. One more asana that we are going to practice in prone position, that is Salavasana, the locust posture. Word of caution, if you are suffering from slip disc, hernia, and cardiac problem, avoid practicing this asana. For locust pose, come out of the Makarasana and place your hands by the side of the body, palms resting on the floor, palms down. Join the legs, chin on the floor, and now inhale, raise both the legs up without bending the knee as much as you can. Do not overstrain, do not overdo. Keep the chin on the floor and maintain the posture with body and breath awareness. Last breath in Shalavasana. Slowly exhale, allow your legs to fall on the ground. Now release your hands, relax in Sthiti Makarasana. Place the hands on your opposite shoulder blades and rest a chin on the intercrossing of your wrists. Now we are going to practice supine position asana. For supine position, slowly turn to the right side and lie down on your back. Legs together, hands by the side of the body. We are going to practice the bridge posture, Setubandhasana. Word of caution, if you have neck pain, cervical spondylitis, avoid practicing this asana. For Setubandhasana, bend both the legs at the knee, bring the heels close to your buttock. Keep your legs few inches apart and place the hands by the side of the body, palms pressing down. Now with the inhalation, raise your buttocks, raise your pelvic region and chest up. Try to bring your chest into the chin. Make a beautiful arch like a bridge on your body. Maintain this posture with body and breath awareness. Be steady and watch your breath. To come out, slowly exhale, lower your hips back on the ground, and then stretch your legs out to the front and relax for a few seconds. The next asana that we are going to practice is Pavan Muktasana, the wind releasing posture. Word of caution, if you have cervical spondylitis, lower back pain, hernia, avoid practicing this asana. For Pavan Muktasana, join both the legs. Now fold both the legs at the knee and bring your knee close to the chest. Interlock your hands and place your hands on your chin. Now with the inhalation, raise your chin up and try to bring your chin close to your knees. Maintain this curling position with mind, body and the breath awareness. Now to come out, slowly release your hands, drop the legs and straighten the legs, relax. And the last supine asana is Savasana. For Savasana, apart your legs, hip distance, toes are pointing to the sides, heels are pointing towards each other. Hands slightly away from the body, palms open to the sky, open to the ceiling. Close your eyes. Relax the entire body, all the joints, all the muscles. And slowly
Become aware of the breath. Notice the spontaneous flow of your breath. Let your breath synchronize with the movement of the belly. Inhale, bulge out the belly. Exhale, drop the belly in towards the spine. Continue few rounds of belly breathing and relax your mind, body, breath complex. We will chant here one round of Omkar. Take a deep breath in. The vibration of Omkar has relaxed the mind, body and the breath. Now slowly come out of the Savasana. Join the legs, slide the legs and join them. Bring your hands close to the body. Sliding the right hand along the floor to take it straight above your head. Fold the left leg at the knee. Place the left palm on your belly button and gently turn to the right side. Resting the head on the right arm, dropping the right knee on the ground. Now with the support of your palms and elbow, slowly lift up, sit at your place. Come to Sukhasana, simple cross-legged position. Eyes remain closed, spine straight. Adopt Chin Mudra on both the hands or Jnana Mudra on both the hands. The tip of your thumb and your index finger are joined. The rest of the fingers are open and you are keeping the hands on your knees, palms facing up. Now we are going to practice Kapalbhati. I will explain Kapalbhati in a sentence, then we all will practice together. Kapalbhati is active, forceful exhalation and passive inhalation. We will inhale through the nose till we feel fullness on our pelvic region and expansion on the chest, and then expel the air by contracting the abdominal muscles and allowing our inhalation to be passive. Now we are going to practice together. A word of caution: if you are suffering from epilepsy, high BP, hernia, women's during menstruation, should avoid practicing this practice. Now let us practice all together. Keep your spine straight, eyes closed. Rest of the body loose and open. Start with an inhalation and start exhaling forcefully, 1 stroke, 1 second. Stop the practice. Come back to your natural breath. Observe your breath and observe how you are feeling after the practice. Give yourself a little bit of time. And now we are going to practice one more pranayama, that is Bhramari. For Bhramari, I am going to explain in one sentence, then we all will practice together. Bhramari is the humming bee sound. We will inhale through the nose. While we exhale, we make the humming sound by producing the sound ma. While we produce the sound, we keep our mouth closed, tongue floating inside the mouth, and there is a slide open in our lips. Now let us practice Bhramari 3 to 4 rounds all together. Come to the sthiti, hands in Gyan Mudra, spine straight, eyes closed. Now inhale. As you exhale, make the humming sound.
Second round, inhale. One more round, inhale. Stop the practice. Again, come back to your breath. Try to feel the vibrations in your entire body. The vibrations of Brahmari soothes your nervous system, feeling an all-pervading calmness in the mind. Now, take this moment as an opportunity to meditate for 1 minute. Keep your eyes closed, spine and head straight, rest of the body relaxed. Wherever your mind is at right now, bring it into the breath and observe the continuous flow of your breath. Let your thoughts dissolve. Let your mind take a U-turn and be drawn towards your inner self. Don't try to hold on to any emotions, any feeling. Let them come, let them go. Make an attempt to keep it on the breath and meditate on some pure thought or on the breath. Now, we will take this meditative state as an opportunity to do the sankalp. I will read the sankalp out for you. Simply listen to this sankalp carefully. I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful, and to a better human being. Through every action of mine, I will strive to create a peaceful and loving atmosphere around me. I strive to break the limitations of who I am right now and include the entire world as my own. I recognize the kinship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. Now let us chant an Omkar. Inhale. Now we are going to end the session with the Santi path all together. Bring your hands into the prayer position. Now repeat the mantra after me. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kashit Dukkha Bhagavet. Om Shanti Shanti Shanti. Pray for the universal well-being, peace. And now slowly, with few blinks, with a beautiful smile, open your eyes. Thank you once again. I wish you all a very great rest of the day. Thank you, yoga demonstrator and teachers.
This practice was so soothing for the body and mind. And as we all can hear, the weather is also applauding for us. So let's applaud for us for this amazing yoga practice we did. Moving on, we have the Prince Kumar Barnwal. Can you come ahead, Prince? I would like to call upon our chief guest, Mrs. Alka Gauri Joshi. Also our Director Sir and Associate Dean. So in male category, the third prize goes to Prince Kumar Barnwal. The second prize in male category goes to Ramendra Kumar. And the first prize goes to Jaideep Singh Bhardwaj. So for the female category, thank you ma'am. For the female category, I would request Director Sir to hand out the trophies. So the third prize goes to Chanchal Bora. The second prize goes to Shreyasha Aishwarya. And the first prize in female category goes to Udangshri Bora. Their dedication and constant practice in yoga asana has brought them here with this award. Keep applauding. The certificates will be distributed afterwards. So as we conclude our event, I would thank you, sir. Thank you, ma'am. As we are concluding our event, the program still stays. As we are concluding our event, I would like to call Professor Deepak Sharma, the chairperson of Sports Board at IIT Guwahati, to deliver vote of thanks. His word of gratitude will express our appreciation to everyone who contributed to the success of this celebration. Sir, please. Yeah, good morning, everyone. It's an honor for me to offer a vote of thanks on the occasion of the 9th International Yoga Day that is observed today by IIT Guwahati. On behalf of Sports Board and the Student Affairs section, our heartfelt gratitude to Professor P.K. Iyer, officiating director of the Institute, for allowing us to organize this event and sharing
his graceful word with us on this occasion. We are fortunate to have Shushri Alka Gauri Joshi ji as a chief guest of the program, who will spare time from her busy schedule on such a short notice. We are thankful to Professor Anamika Barua, Dean of Student Affairs, Professor Bithia and Professor Amresh Dalal, Associate Dean, Student Affairs, other staff member of SS sections for their constant support and guidance for successfully organizing today's event. We are grateful for the support and help received from the IPM section, engineering and maintenance sections for the arrangement required in order to make the event successful. We are thankful to Professor TV Bharat, Head CET, and all the staff members who extended their hand in the live streaming of the 9th International Yoga Day and capturing the memorable moments. I would like to thank all the deans and associate deans, head of the department, registrar, and the team for their support. Today, we have witnessed the remarkable performance by our volunteers for demonstrating yoga. We are thankful to our yoga instructors and the team for their support on the International Day of Yoga. This program cannot be successful without the enthusiastic participation. So therefore, we are thankful to all the participants who have come in this weather where there was a raining. So my gratitude to all the participants here. Last but not the least, this event cannot be imagined without the constant support and dedication of the staff member of the Gymkhana Sports. So I would like to first congratulate. So this is the first time we have made the coordinator of this program. So first, I would like to congratulate Ms. Tulika Bharali. She is the coordinator of the program. And of course, all the members, Mr. Romin Datta, Dr. Diganto Sekia, Mr. Rajiv De, Mr. Sadanand Fukan, Mr. Kishle Chakravarti, Dipunjay, Nibajoti, Jaya, all of you for your constant support to make this program successful. I also thank Rushi, the General Secretary Sports, and the Spirit team for their constant support and participation. I thank all the sports staff for making this venue clean and attractive for performing yoga. With this now, we conclude the event. I invite all the dignitaries and participants to have refreshment that is arranged outside this hall. So thank you and have a nice day. Thank you very much.